sockets. So in last class we have some introduction about socket, but let me restart again. Uh, as we were discussing that there are two machines that are communicating. So suppose this is the machine, this is the machine that is sending data, and this is the machine that is receiving the data. So actually what is happening here, actually in reality there are actually process that in scenario they are communicating. So it may be this the case that there is a process, let me call it P1, and there is a process, let me call it P2. These processes are actually communicating, or they want to communicate. Yes, so assume that P1 process is generating some data, and this data is meant for process P2. Okay, so now P1, when P1 generate data, it cannot itself send it to P2. Okay, so now P1 requires that there should be something or some service to whom P1 will give its data, and then that service will deliver the data to P2. That means we require a transport kind of service that will give data of P1 हेलो to P2. सर हाँ, yeah. सर बहुत कोई का ज्वाइन नहीं हो रहा है तो ग्रुप में मैसेज कर रहा है ज्वाइन करने के लिए Okay, but I am not getting any request actually. I'm not getting. ओके सर मैं फिर बोल देती हूँ What we were talking about? We were talking about that process P1 want to send data P2, so they require a transport service. Now it will be the job of the transport service to take data from P1. You know that internet kind of transport service. Internet offers a transport service. You can access that service, and using that service, process P1 can deliver data to P2. But now there is one problem. In order to hand over your data to that transport service, you need an interface actually, or you can say that we require a kind of middleman. Okay, so that middleman will actually do some other work, the kind of translation. For example, that means it may be the case that whatever data P1 is generating may not be in proper format that is required by internet layer transport protocol. Okay, so for example, what I mean that uh, actually you know that on internet the transport service receives data in form of certain chunks, and they require sender address, receiver address, and some other information as well. So now, who will be responsible for this kind of formatting and taking the data from P1 to and then giving data to P2? Okay, so all these kind of steps need to be done. So in order to do these tasks, we require a interface. Okay, so in short, you say that there is actually those two those two parties, that means internet transport layer service, and your application may not have may not work with same aspect or same capacity, or they are having different kind of nature of working. Okay, so now there is a it is needed that there should be a party that will that will establish coordination between them. We call it interface. So it's a kind of thing like so suppose that there are two persons. One person only knows, let's say, Tamil, and there is another person who knows only Hindi. Okay, so when both of these people meet, they will not be able to talk each other, because they cannot interpret each other's wording, whatever. So suppose, let's say there is a party A that speaks Tamil, it doesn't know Hindi. There is another party B that only speaks Hindi, but it doesn't understand Tamil. Then you know that if suppose A want to say something to B,
So A will said that thing in Tamil, but B will not understand that. Why? Because they are having they are a different kind of persons. They do not know a common language. So now we require a kind of party, or you can say that interface, and this interface will translate Tamil into Hindi and Hindi into Tamil. So now with the help of this interface, both these parties can communicate with each other. So this interface is generally, in case of natural languages, this interface is called a translator. So translator is a person that knows both of the language, and then if translator is there, both parties can communicate. So similar kind of scenario is here. P1, P2 have their different kind of data. They have different data. They generate data in a different mechanism, and a process that the transport layer service works differently. Okay, so there is a requirement that there should be a party that will coordinate between them. So that party is generally a socket. Okay, so socket does this kind of interfacing so that both the parties can interact with each other in order to provide or in order to achieve data transportation. 1 minute. मैं एक बार फिर से आपसे करना चाहूंगा, लोग टाइमली ज्वाइन किया करें, इस तरीके से लेट ज्वाइन करते रहेंगे देन सारे क्लास का फ्लो बेकार हो जाता है ना. दिस इज नॉट अ ऑफलाइन. अदरवाइज मैं आगे से जो ना लोगों को ज्वाइन नहीं कराऊंगा. 10 के बाद कोई भी आएगा, मतलब 10 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट होने के बाद आई विल नॉट अलाउ. ओके, सो बी केयरफुल. सर ट्राई बहुत देर से कर रहे थे, नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा था. नहीं ठीक है, लेकिन वो आज थोड़ा सा सिचुएशन थी मेरे पास, मेरी मशीन में जो ना ये गूगल डॉक काम नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से मैंने कुछ एक्चुअली कैश को क्लियर किया था, तो मेरा सर्वर बंद हो गया था. तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा इशू हुआ हो, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होता है. तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोगों ने हैबिट बना रखी है कि आराम से ज्वाइन करते हैं. आई हैव नोटिस सम पीपल, वो उनका काम हो गया है, वो रेगुलरली लेट ज्वाइन करते हैं. सम पीपल आर देयर, दे ज्वाइन सिंसियरली, टाइमली, सिंसियरली टाइम से ज्वाइन करते हैं. तो फिर वो लोग अगर वो मेरी नॉलेज में आ जाएंगे धीरे धीरे, देन वो आपको नुकसान होगा उसमें. ठीक है, वो इनडिसिप्लिन का दैट इज अ काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन. आई विल कंसीडर इट इज अ काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन. कीप इन माइंड. सर 1 मिनट. हाँ, चल. सर बोल रहा हूँ तो सर यानी यूनिवर्सिटी अब ऑफलाइन होगी सर, आज तो 21 तारीख हो गई. ना ना ना, अभी फिर से आपने देखा बिहार सरकार की गाइडलाइंस आ गई हैं, एंड उन्होंने अभी सर तो इसमें तो यथास्थिति 6 तारीख बनाए तक रखी बढ़ा है, दिया. 6 तारीख तक. तो Yes. 6 तक ऐसे ही चलेगा. I do not know what university will decide, but I think university will not go against the order of state government. Okay, we are central university, but central government have given management of COVID related things and orders uh, on a local authority basis. So the state government have been given the power. Okay, so we are biding. We are we have to also follow the orders of state government. That's why I don't believe that university will open before 6. ये मेरा परसेप्शन है, बट आई कैन नॉट से कि what authorities have their own perception or something like that. तो वो तो या तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काम करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट. मेनली वी वर्क ऑन द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट राइट नाउ सेकेंड वेव जब आई थी उस टाइम से ऑल स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन पावर टू मैनेज कोविड. सो वो अपने हिसाब से लोकल लेवल पर लॉकडाउन और जो भी गाइडलाइंस है वो लगाते हैं. फर्स्ट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था, लेकिन अब सेकेंड वेव जब आई थी उस समय के पहले से all power have been given to state governments. Okay, so that's why university is bound to follow the order of state government. So I believe कि 6 से पहले नहीं होगा ओपन.
6 के बाद क्या होती Okay, है sir. स्थिति, कैन नॉट से। तो तब तक ऐसे ही चलेगा। बट इसको 100% वो नहीं मान लेते कि मैं ये कह रहा था इसलिए ऐसा है। आई एम जस्ट गिविंग माई व्यू। Okay, so let's come back to our topic. Okay, so what we were talking about, we were talking about this kind of interface. Now let's take another example to understand all these things. Let me give a practical kind of example in that is example related to your real life scenario. Okay, and then we will come back to all this topic. Okay, so suppose that there is a house. Here, let's say there are some children. Let's say there are 5 children are there. 5C means 5 children, and they lives in this house, and there is a letter box there. Okay, there is a letter box. You can say that that letter box is attached at the door of the house where these 5 children are living. So they are living, let's say the children are in some X city in a country, and suppose that there is also a house in another city, let's say Y, कोई दूर की city है. It's, you can think of this is Delhi, this is Kolkata. Okay, and let's say there are 8 children living there. Have a letter box with the door of their house. Okay, now let's assume these children are friends with each other. Okay, now the children communicates with each other by sending letters. Now there is a postal service. Now let me draw it. A postal service is there. There is a postal service. There is a postal service. Now the job of this postal service is to send letters from one position location or the side and then delivers to the receiving side. So let's see the details of this kind of service. So now assume that this postal service actually can access or have provides a connection between these two letterbox actually. So what this postal service does, this postal service provides a person. That person may be a permanently dedicated or it may be dynamically allocated. So one person comes from this postal service and it can collect the letters from this letterbox, brings them to a central facility, sort them, and then deliver that letters to in this postal box. So this what this postal service does, this postal service actually takes a letter from one letter box and delivers the letter to another letter box. Okay, now assume that there is a person, there is a child C1, and this child C1 writes a letter to this child. Let's say here there is a child CK. Okay, there is a child CK. I'm not using the actual names. You can use actual names, or let's say the child name is Ravi, and this child is let's say Anuj. Okay, now child Ravi want to send some information or want to write something to Anuj. They are friends actually. So Ravi prepares a letter and writes that letter in and then put that letter in an envelope, writes his name, address on that letter as a sender address, and then also writes the letter of the recipient. That means it's writes the name of the recipient of the letter, who is Anuj actually. Okay, so it writes the name of Anuj and his address on the letter box and on the letter actually envelope of the letter, and puts the letter within the envelope, uh, fix it, glues it, fix the letter with the glue, close that envelope. Okay, sorry, close that envelope and put the letter within that. After putting that letter in the envelope, and then it the Ravi, the child Ravi puts the letter into this letter box that is attached in front of their house gate.
इनके घर के बाहर अटैच्ड है, उसमें एनवलप में रख दिया. Now this postal from this postal service, usually a postman comes on a daily basis. Let's say at fixed time. Let's say it comes at 4 p.m. evening, 4 p.m. and then collects the letter and brings it to a central facility, and then they decides the route how the letter will be sent and to whom the letter need to be sent. And then there's a postal service again send a man. That man comes and then uh, uh, on the seeing by seeing the address, they deliver that letter into this postal box. ठीक है, यहाँ से they collect the letter from this postal box and then deliver the letter to this postal box. And from this postal box, the child Anuj comes and then takes the letter. Any other child can also come and take the letter, but since letter is having name of Anuj, so the letter will be given to Anuj, and then Anuj can read the message sent by Ravi. Okay, so you can find the similar scenario in this case also. Let me tell you what is that scenario. Here, postal service works as an internet. Okay, postal service is equivalent to your internet. पोस्टल सर्विस का काम क्या है? लेटर को एक जगह से दूसरी जगह, दैट मीन सेंडर्स के पास से रिसीवर तक ले जाना. तो पोस्टल सर्विस ऑफर्स द सर्विस ऑफ delivering collecting the letter from sender side and then delivering the letter to the receiving side. So similarly, internet, what internet does, it collects the data from the sending process and delivers the data towards the site of receiving process. Okay, so internet is equivalent to this postal service. Okay, now this child I was talking about, and this child is equivalent to process P2, and you can think of this house as the sender machine. That is, I was talking this sender machine. So this machine, let's say this machine is, let's say M1. So M1 is equivalent to this house. Okay, so let's say this house is H1, then H1 is equivalent to M1. And let's say this house is H2 and this house is equivalent to, let's say this machine is M2. So this house is equivalent to this machine. Okay, and this postal box PB1, let's call it PB1, and let's call this postal box as PB2. So this PB2 is equivalent to this socket SK1. Let's say this socket is SK1 and this socket is SK2. So your PB1 is equivalent to SK1 and this is equivalent to SK2. Okay, so this is the similarity here. So now let's come back to this example. Now, how the data delivery is being done here? P1 process generates data. Okay, and then this data is given to this socket. This is similar to Ravi writes a letter and then puts that letter into postal box SK1. Okay, sorry, PV1. Okay, now Ravi, do not worry about how this letter will be delivered to Anuj. Similarly, here process P1 handovers whatever data it has to this socket S1, and now it forgets or it doesn't take in any tension now. It assumes that the socket will do something, or the socket will do whatever it should do, and it will think of that jaise hi process will assume that I have given the data to socket, and now this is the responsibility of the socket that it will deliver, or it will arrange delivery of the data to this socket. Okay, and actually what is happening, this internet layer service, or there is a service of internet that is similar to your this postman, and that postman collects your similar to the postman internet's protocol, let it may be UDP or TCP, will collect the data from here and then will deliver the data here. Okay, so internet have equivalent to the postman internet have two entities. One is called the TCP or UDP. Okay, these actually behaves like your postman.
ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप टीसीपी की सर्विस चाहते हैं या यूडीपी की. इट कैन बी डिसाइडेड बाय द प्रोसेस, बट वंस it has been decided that TCP is going to collect the data, so TCP will take the data from socket and then deliver data to the socket, and now this socket will deliver data to the actual process. Okay, so there is an analogy to this. Now I hope you might have understood how this data delivery will be done. If you have any question, you can ask. If you have any doubt, you can ask. Sir, both the collecting of data and delivering of data is done by TCP only, sir. Yeah, either TCP will do this task or UDP will do this task, and both TCP and UDP belongs to the internet actually. These are the protocols actually. For example, the postman who will collect letter from here belongs to this postal service. Similarly, the postman who will deliver letter to this postal box will also be the part of this postal service. Okay, so similarly here TCP or UDP will mimic the postman actually. Okay, सर Yes, sir. हेलो सर टीसीपी और यूडीपी दोनों सेम ही होता है क्या यूडीपी no, these are actually two protocols. They work differently, but ultimate job of these protocols is to deliver data from sending machine to receiving अगर machine. P1 जैसे सेंड कर रहा है डेटा 100 को पहले जैसे भेजा maybe or may not be, maybe or may not be. Some will be able to know that some may not, P2 process P2 may not know, but it will expecting some data. It will be expecting some data. Dialogue कर रहे हैं, so it will depend on the protocol whether the party P2 is going to accept data. So P2, if P2 and P1 both are accessing that using the TCP as a transport service, then there will be a dialogue between both of them, and then that's why P2 may be expecting some data. P2 may be knowing that some data will come. क्या data आएगा? It will not know, but it will know that some data will come. But in case of UDP, if they are using UDP, then P2 may not know that regarding that data. Okay, for example, sometimes आप letter receive करते हैं, you are going to receive a letter from your friend because friend ने आपको पहले से inform कर रखा है. Sometimes you may get the letter as a surprise. Okay, now one more thing here, you might have understood that process P1 need to provide the address of the recipient. Okay, so Ravi writes the address of himself on the letter and also address of his friend Anuj on the letter, because अगर address नहीं देंगे then there are 8 persons, there are 8 childs. If Ravi doesn't write the name of the recipient on the letter, then it will not be clear कि ये letter किसको belong करता है, to whom this letter need to be given, और किसको ये letter जाना चाहिए, है ना. सो सिमिलर टू द कौन से चाइल्ड को लेटर देना है, इसी तरीके से यहाँ पर डिसीजन लेना होगा टू विच प्रोसेस द डेटा नीड टू बी गिवन. सो दैट इज डिसाइडेड यूजिंग पोर्ट एड्रेस. वी हैव डिस्कस्ड दिस, है ना. सो पोर्ट एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई the recipient process among the process that are running on this machine, because this machine may be running multiple processes. Similarly, this machine also may be running multiple processes. You might have noticed that when you work on a machine, you simultaneously start let's say internet. That means you are using some one or two browsers,
You might be running music in background, and you might also be doing printing simultaneously. Your antivirus is running in background. So a lot of processes are running. So in to which process the data need to be given, it need to be also identified. So in order to identify the recipient process, you need to have an address for that process, or identifier. You need to decide an identifier. So the port address actually works as an identifier at both the machine. The story is same on the server sender side also. Okay, because sender side also may be running multiple processes. So the receiving process also need to know who is sending that data to me. For example, Anuj receives a letter, then Anuj need to know who have sent this letter to me. So by the sender address, Anuj will be able to know who is the sender of this letter. That is Ravi actually. Similarly, address is also required by this postal service. Actually, this postal service mainly required the address of Ravi. So it actually requires two things. One, address of this letterbox. कि letter box. Okay, postal service only not connecting only these two letterbox. It is actually a broad service, or let's say in this example belongs to India, and we are talking about this postal service, which is India Post. India Post. So India Post service doesn't connect only two houses by their service. They connect each and every house of India by postal service. Okay, so each postal box or house should have an address also. So this letterbox should have an address. This letterbox also need to have address. Only then letter can be delivered to this letterbox. So you know that house address works as a this kind of home address. So home को आप house address से या complete address से identify करते हैं. Okay, so there are two kind of address involved here. One is the name of the recipient and sender, and then address of their homes. So your the letter you write on your postal letter or your letter contain two things: name of the recipient in case of Anuj, and then address of his house that is represented by this letterbox. Similarly, sending side, name of the sender, that is the name of child Ravi, and then address of the house where Ravi is living. So there are two things. So similarly, in case of internet, there are also two things. Address of the person, sender and receiver. यहाँ पर Ravi और Anuj से identifier हुआ ना. Here sender and receiver will be identified by some port number. So process P1 will also having some port number. Process P2 will also having a port number. Then here sending machine IP address is equivalent to the address of this house. Similarly, receiving machine's IP address is equivalent to address of this house. Got it? So there is a lot of analogy in both of these examples. So I think now you may have understood what is the concept behind this delivery, or what is the role of the socket. So socket का role क्या है? It receives the data from the process at this point, and then it handovers the data to TCP or UDP. Here, what is the job of the socket? It receives the data from TCP and then delivers data to the proper process. This is the job of the socket. So socket is working as an intermediary. Receives the data from, just for example, here letterbox receives the data from Ravi and then gives the data to the postman. Here the letterbox receives the data from postman and then gives the data to recipient, that means Anuj. Similarly, here socket is what socket is doing? It receives the data from process P1 and then it gives the data to TCP or UDP, which is working as a postman. Then here socket receives the data from postman and then delivers the data to the receiving process P2. Okay. Yes, sir. Now let's move ahead. Hello. So we have talked about address also. Hello. Please. सर कौन who decide सर TCP follow करना है या फिर UDP कौन decide करता है? As a application developer, you will decide. Okay. What is a process actually? Process is your application that is running. So for example, you have created an application on internet. You have implemented a service actually. So you have developed an application for that.
So as a application developer, on the requirement of your service, you will decide whether we will go for TCP and UDP. We will come to that point now. Okay. So it is your job as a application developer. You will decide now which service of the transport layer you will take. It will depend on the need of your application, what you want to do with your application. So now we are coming on that shortly. Okay, now let's come back to our protocols. We have discussed about these protocols a lot. Now, since we are discussing application layer, and you know that application layer offers a set of protocols that helps your applications. Okay, it is important that your applications need to have provided some assistant so that your application development task becomes easy for you. So application layer protocol actually facilitates your applications so that your applications can exchange data without any worry or without any headache. Okay, so application TCP/IP protocol offers certain application layer protocols that will help your applications to do data delivery and different kind of communication between your remote processes. Okay, your application have multiple remote processes that are running on different machines, and you need to establish a communication among those processes so that you can do data exchange in order to fulfill your service. Okay, so in order to provide a data communication, application layer offers a set of protocols that assist you or your application to exchange in exchanging the data. Okay, so let's talk about what application layer protocol does. So as similar to another protocol, any kind of protocol, we have seen that protocol defines the type of messages that will be exchanged. Okay, when two parties communicate, you know that a protocol is required among them. Okay, so two or more parties are communicating, then a protocol need to be there that will regulate or that will govern their communication process. So on it does on not only it governs the communication process, it also specifies a lot of things. For example, first thing, whenever you will have a protocol at any layer, we are talking about application layer, but these things are common to all of the protocols, irrespective of any kind of layer. So whenever you have a protocol, so protocol defines the type of messages exchanged. Okay, so we will see some of the examples then where you will see that protocol define the message. For example, if you talk about HTTP protocol, आपने सबने नाम सुना होगा HTTP protocol. HTTP protocol have defines two kind of messages that can be exchanged by processes. One is called request message, second is called response message. Okay, so the application layer protocol will define what kind of messages can be exchanged by the communicating processes. Okay, मैसेज कौन कौन से एक्सचेंज हो सकते हैं वो उनकी फॉर्मेट डिफाइन करेंगे, देन सॉरी टाइप डिफाइन करेंगे. आफ्टर डिफाइनिंग द टाइप यू आल्सो नीड टू डिफाइन व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर मैसेज, वी कॉल इट सिंटैक्स. So message syntax need to be defined. Who will define this aspect of the message? The protocol itself. For example, आप HTTP message के जब हम protocol discuss करेंगे, then we will see that your request message have multiple header lines and a fixed structure is there. Some codes has also need to be defined. So message syntax need to be defined, and it also need to be defined what should be the additional fields or what fields need to be added in addition to the data to your message. जो message format होगी उसमें data के साथ साथ what field need to be added and which field will have what meaning, that is defined in message semantics. Okay, so fields के meaning define करना होंगे and कौन सा field कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा, all these need to be defined. Message semantics मैंने अभी बता दिया कि what जो fields हैं message में, जो where the message the containing some fields that generally called header or header elements, those elements meaning need to be defined कि किस field का क्या meaning है. Okay, and then protocol also defines the rules for exchanging these messages, when what kind of message will be sent by processes, and once a process receives a particular kind of message, then the rule also defines how the response need to be given to that message.
एक मैसेज आपको मिला तो उसको जवाब कैसे देना है उसको, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज नीड टू बी सेंट बाय द रिसीविंग पार्टी काइंड ऑफ थिंग। तो किस केस में कौन सा मैसेज देना है उसके लिए भी रूल्स आपके प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। ओके, so these are the mainly four important things that a protocol defines. Okay, so इसमें आप इन चार चीजों को डिफाइन करके you can describe a protocol. So a protocol's definition have basically these four things. We will see with an example. Now there are two kind of protocols. You can divide all these protocols that are available in the world of internet. You can categorize into two categories: public domain protocols and proprietary protocols. So public domain protocols are those protocols that that are not copyrighted. They are free to use. You can implement any protocol without taking permission from anyone. Okay, so these are the protocols. They are standards in nature, and you need to just implement them as it is, as they are defined. You cannot modify their concepts. Okay, and these protocols are generally defined in RFC documents. So RFC stands for request for comment. Request for comment. So and each document have a RFC document number, unique number actually. And many times it happens that a protocols like HTTP have multiple RFC associated with it. ओके, सो एक प्रोटोकॉल को डिफाइन करने में कई सारी RFCs लगी होती हैं, और यू कैन से दैट प्रोटोकॉल हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, RFC डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद इट. ओके, समटाइम्स एक प्रोटोकॉल, वन प्रोटोकॉल कैन बी डिफाइन ए सिंगल RFC. सम प्रोटोकॉल्स मे बी डिस्क्राइब्ड इन मल्टीपल RFCs. सो आपको सारी RFCs पढ़ना पड़ेंगे. एंड दीज RFCs आर द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स अवेलेबल कराता है. ओके, IETF दिस इज एजेंसी जो कि स्टैंडर्डाइजेशन देखती है. सो if you want to have a protocol, you develop, suppose that you develop a protocol and you want that I should make it free. Okay, I want to make it as a standard protocol. So you have to submit this protocol for scrutiny to IETF or some other agency, and then they will look into your protocol. If they find out your protocol is good, then they will accept that protocol as a RFC protocol or a standard protocol, and then they will publish that protocol आफ्टर स्क्रूटनी. कई बार हो सकता है कि कुछ वीकनेसेस थी, आपसे कहा जाए हम इनको ठीक करिए, कुछ करेक्ट प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक किए, एंड दे विल पुट इट इनटू पब्लिक डोमेन. पहले एक्सेप्ट करने से पहले पब्लिक डोमेन में डाल देंगे. एंड पब्लिक डोमेन का मतलब ये, उसको RFC का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट. तो जब आपका प्रोटोकॉल है स्टैंडर्ड बनने से पहले एक बार पब्लिक डोमेन में जाता है, एंड देन the agency that is handling this process will request comments from the people from throughout the world. दुनिया के कोई भी आपके प्रोटोकॉल को पढ़ सकता है, उसमें कमियां हैं उनको पॉइंट आउट कर सकता है, एंड देन आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा. वंस एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड, देयर इज नो इशू विद योर प्रोटोकॉल, देन इट विल बी पब्लिश्ड एज ए स्टैंडर्ड एंड इट विल बी गिवन ए यूनिक RFC नंबर. ओके, सो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का फायदा ये होता है कि दे ऑफर्स इंटरऑपरेबिलिटी, क्योंकि सब लोग एक जैसा ही HTTP, फॉर एग्जांपल HTTP इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. सो whoever develops HTTP, उसके लिए आप एप्लीकेशन बनाते हैं, HTTP को इंप्लीमेंट करते हैं, सेम तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे आप. ऐसा नहीं है कि आपने HTTP इंप्लीमेंट किया वो अलग तरीके से, या गूगल ने इंप्लीमेंट किया HTTP वो अलग होगा, फेसबुक ने इंप्लीमेंट किया HTTP अगर, तो वो अलग तरीके से होगा. एवरीथिंग विल बी सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड. So this is the advantage of public domain protocol. So some of the examples are HTTP, SMTP, post office protocol, POP बोलते हैं आप उसको, IMAP है. Lot of protocols are there that are in RFC. You can and आप इनकी complete detail RFC में देख सकते हैं. Even implementation भी मिल जाता है इनका. Then there are some other kind of protocols that are called proprietary protocols. So proprietary protocol का मतलब है, as an individual or a company you developed a protocol, you get it copyrighted. So जब आपका प्रोटोकॉल कॉपीराइटेड हो गया तो आप इसे जनरली पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं. सो नोबडी कैन यूज योर प्रोटोकॉल विदाउट योर परमिशन. आप कंट्रोल करते हैं इसका यूज, कौन यूज करेगा, कौन इसे पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, समथिंग लाइक दैट. सो फॉर एग्जांपल स्काइप, it is a protocol that is proprietary. There are more protocols are there that are proprietary in nature. Okay, so you can see two kind of protocols. Generally we will study these protocols.
these are the protocols that are part of your internet ज्यादातर, ठीक है। ये ज्यादातर कुछ एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का अपना प्रोटोकॉल है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस। सर हाँ प्लीज। जो पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल बताएं सर, तो बोले ये फ्री टू यूज है सर, सभी लोग यूज करते हैं, तो ये फिर अर्न कहाँ से करते हैं सर खुद का? ये तो अर्न करने का कोई जरूरत नहीं है उसमें। सर कोई जैसे डेवलप किया होगा तो उसको भी तो अर्न करना होगा ना। नहीं, आपको जो अर्न नहीं करना चाहते हैं वही उसको पब्लिक डोमेन में बनाते हैं। अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आप अर्न करिए। ओके सर। है ना, दोनों तरीके के लोग होते हैं। कुछ सोसाइटी के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ने देखा होगा, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? यस सर। he developed one of the first antibiotic और that was penicillin। पेनिसिलिन का नाम सुना है ना आपने? आपने ये भी सुना होगा पेनिसिलिन के बारे में, उसने कितने लोगों की जान बचाई थी। दैट वाज वेरी ब्रेक थ्रू रिसर्च, है ना। एंड अब आप अगर मान लीजिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के डेवलपमेंट को पेटेंट करा लेते हैं, देन वो हो सकता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं, बट ही डिडंट डू दैट। तो कुछ लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम करते हैं। लिनक्स आपने देखा है ना, फ्री मिलता है आपको, माइक्रोसॉफ्ट फ्री नहीं मिलता है। यस सर। है ना। माइक्रोसॉफ्ट तो कितने रॉन्ग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करता है, आई कैन नॉट से बट आई हैव टू से, क्योंकि वो क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रेटजी देखिए, विंडो, व्हाई विंडो इज पॉपुलर, व्हाई एवरीबॉडी यूजेस विंडो नॉट लिनक्स, जबकि लिनक्स इज वेरी वेरी फार बेटर देन विंडोज। विंडोज कहीं नहीं टिकता है लिनक्स के आगे, बट स्टिल पीपल यूज लिनक्स। कैन यू टेल मी द रीजन? आपको क्या लगता है कि विंडोज इज वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम? But as a computer academician, I know that Windows is not very good operating system. It is good, but it is, if you compare it with Linux, बहुत poor है Linux के मामले में सामने। Linux is free। तो कुछ लोग सोसाइटल बेनिफिट के लिए भी काम करते हैं। लिनक्स में आपने देखा बहुत सारे फ्रीलांस डेवलपर्स हैं, कई कंपनीज भी हैं। हालांकि लिनक्स में भी अगर आपको स्पेसिफिक सर्विस चाहिए, यू कैन आपको लिनक्स बहुत कम लाइसेंस में मिल सकता है अगर आप कमर्शियल यूज करना चाहते हैं। तो अगर आपको ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए जरूरत पड़ती है, अगर आप विदाउट ट्रेनिंग सपोर्ट के यूज करना चाहते हैं, फ्री कर सकते हैं आप यूज। बट विंडोज में देखा है, विंडोज आप फ्री नहीं है। आप जब लैपटॉप खरीदते हो तो आपको लगता है कि विंडोज फ्री आया है, और फ्री नहीं आया है। यू हैव पेड दैट, पेड अबाउट दैट विंडोज यू हैव रिसीव्ड। आपको जो विंडोज मिला होता है लैपटॉप के साथ, आप उसका पे कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट पे कर रहे हैं आप। वो कंपनी के थ्रू ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, जो लैपटॉप कंपनी है उसके थ्रू। जहां तक इसमें अच्छी कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप है वो विंडोज के साथ ही आता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रेटजी है, वो कंपनीज के थ्रू एमओयू यूज करके और सब कर कहते हैं आप हमारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम दीजिए। इवन कई सारे जो एसेसरीज आती हैं, आपने देखा होगा, उनके लिए लिनक्स का ड्राइवर ही नहीं मिलेगा। कई सारे प्रिंटर्स होंगे या और भी डिवाइसेस हैं, उसमें विंडोज के केस में ड्राइवर बनाते हैं वो केवल, तो वो माइक्रोसॉफ्ट की बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लिनक्स का ड्राइवर नहीं आएगा, विंडोज का ड्राइवर वो बनाते हैं केवल वेंडर्स। तो वेंडर से है कि आप हमारा ड्राइवर बनाइए, दूसरे का मत बनाइए। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट डोमिनेट करता है मार्केट में। इवन अगर ये रॉन्ग प्रैक्टिस माइक्रोसॉफ्ट ना करे, या लिनक्स के पास पावरफुल कम्युनिटी हो पूरी ऐसी जो बिजनेस में ये सब पॉलिसी और मैनिपुलेशन करे, तो विंडोज एकदम खत्म हो जाएगा। चलिए, ये सब बिजनेस की चीजें हैं, बट थिंग्स आर देयर। तो सम पीपल आर देयर जो पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही लोग जो ना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बना देते हैं। फिर कई लोग, हम जैसे आप जैसे लोग एकेडमिशियंस जो हैं, हम लोग जो अपनी रिसर्च करते हैं वो कभी वो उसको जनरली फाइनेंशियल यूज के लिए थोड़ी करते हैं। रिसर्च की पब्लिक डोमेन पब्लिश कर दी। कई लोग पेटेंट करा सकते थे लेकिन नहीं कराते हैं। तो सम पीपल्स वर्क फॉर सोसाइटीज बेनिफिट। Even governments also contribute in this process. चलिए, so let's come back to the transport layer service. We have seen that there are two transport layer services on internet. We will see both of these services in very much detail, but let's talk about some qualities that are expected by applications.
whenever you talks about a transport service, you expect quality, है ना, quality of service. For example, अगर आप you travels in Indian Railway, then once you travel Indian Railway, then आप हमेशा जब भी जाते हैं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कहते हैं इंडियन रेलवे को ये भी सर्विस देना चाहिए, वो भी सर्विस देनी चाहिए, फूडिंग सर्विस अच्छी नहीं है, कभी डिले होती है ना, कभी आपकी सीट्स पर कोई दूसरा कब्जा करके बैठ जाता है. So lot of problems you face, and then you say that इंडियन रेलवे को ये चीज ठीक करना चाहिए, वाईफाई दे देना चाहिए था, है ना, स्टेशन साफ सुथरे नहीं है ना. Similarly, if you talk about some bus service, you may expect certain quality of service there as well. So any kind of service, for any kind of service, always their customers expect some quality of service. Okay, आपने देखा है ना, आप रियल लाइफ में अगर किसी आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, देन यू एक्सपेक्ट सम सर्विस होटल से या रेस्टोरेंट से. आप चाहते हैं, कई बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, डिजिटल पेमेंट नहीं है आपके यहाँ, ये बेकार चीज है, यू से दैट समटाइम्स, और आपका फूड अच्छा नहीं है ना, या आपके सर्विस करने के लिए जो स्टाफ है दैट देयर बिहेवियर इज नॉट गुड, है ना. सो व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट हियर, व्हेन यू टॉक अबाउट सर्विस, देन यू आल्सो टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सर्विस. Okay, now it may be it may look in very strange to you that can we also expect the quality of service from internet services or the transport service that is offered by internet? Yeah, actually yes, answer is yes. Whenever you are developing some application, then you require certain kind of, your application may require certain kind of qualities of services from the transport service of internet. So what are those qualities or service expectation? First service expectation or the first kind of service you may require is freedom from data loss. Actually, what happens when you hand over the data to maybe TCP or UDP, because there may be noise on the internet, there may be congestion on some router, or certain set of links may gone down, so your packet may lost. You might have seen that, है ना, राउटर्स पर पैकेट लॉस हो जाते हैं कंजेशन के कारण, या चैनल पर बहुत ज्यादा एरर आ जाए तो पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं. So that means you may face data loss. Your application, when you are suppose you are developing an application, then it may be the case that your application is sending them some data, internet transport service may lost this data, है ना. Now data loss may not be acceptable to your application, or sometimes your application may tolerate that data loss. So again, this is a kind of expectation your application may have from a transport service, that it should not give or provide any kind of data loss. कोई data loss नहीं होना चाहिए आपके application को अगर मैं ये service use करूँ तो. Okay, but internet transport services may lost your data. Okay, so some applications like audio applications may tolerate that loss, like audio video applications, खास करके mainly multimedia applications may tolerate data loss. For example, suppose you are listening online music on some online music site, let's say Gaana.com or Spotify. नाम सुना है ना सबने? I don't use these services, but I have heard their advertisement. I have seen their advertisement on television. So these are the online music delivery services. You can listen your music online there. But suppose that some data loss happens. So what is the meaning of data loss? You are listening some music. हो सकता है कुछ एक वर्ड मिस हो जाए आपका ड्यू टू सम डेटा लॉस. तो अगर बीच में गाना सुनते सुनते एक वर्ड भी चला जाता है तो जनरली आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई अर्थ का अनर्थ तो नहीं होता है. You can tolerate that. Similarly, you sometimes you watch online movies, like YouTube पर आप मूवी देख रहे हैं या कोई और साइट से ऑनलाइन मूवी वॉच कर रहे हैं. You are watching some program on Voot. There is a site that delivers the contents online. है ना, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के कंटेंट्स आपको मिले, या हॉट स्टार्स पे हैं आपके कंटेंट्स, और यू आर वाचिंग सम लाइव स्ट्रीमिंग. सो you lost, let's say, one frame of your movie. एक मूवी के एक फ्रेम, एक पार्ट, अमिताभ बच्चन ने विलन को मुक्का मारा और मुक्के के बाद क्या होता है, विलन गिर जाता है,
सो सपोज विलन के गिरने वाली जो फ्रेम है वो आपको डिलीवर नहीं हुई, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा सा लगेगा आपको कि अरे यार मजा नहीं आया, लेकिन उससे ज्यादा ओवरऑल एक्सपीरियंस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको मूवी अच्छी लगती है, यू विल बी हैप्पी, मूवी खराब लगेगी तो अलग बात है। सो दैट मीन्स मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कैन टॉलरेट दिस लॉस, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, है ना। बट लेट्स टॉक अबाउट फाइल ट्रांसफर। So you are sending a file that contains very important information. Okay. Now suppose that your application is delivering that file to your recipient process, and let's say one paragraph or one line is lost in that file. Then अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना। और suppose that you are just transferring money on internet, तो आपका जो पैकेट है जो डेटा लेके जा रहा है उसमें आप somebody you are transferring money let's say 1 लाख to somebody and एक जीरो गायब हो गया ड्यू टू डाटा लॉस, और 10 लाख 10,000 ही गए, एंड यू थिंक मैंने 1 लाख ट्रांसफर कर दिया, रेसिपिएंट को 10,000 मिले, समथिंग लाइक दैट, अज्यूम कर लीजिए दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में हैपन। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डेटा लॉस को हैंडल करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेटजी एंड वी टेक केयर ऑफ दैट by different mechanism. Okay, so the point I want to say is that there are certain applications, especially file transfer applications or telnet remote login kind of applications or email applications, they cannot operate a data loss, they cannot tolerate data loss. आपने एक ईमेल भेजा, उसमें इंपॉर्टेंट लाइन थी वही मिस हो गई, नहीं डिलीवर हुई, तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, मीनिंग कैन चेंज, कैन बी चेंज, है ना। सो दैट मीन्स वी कैन नॉट, जो जनरली टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो टेक्स्ट ट्रांसफर करते हैं, है ना, इन फॉर्म ऑफ फाइल और कमांड्स बेस्ड जो हैं रिमोट लॉगिन से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, they cannot tolerate the your loss of the data. Okay, so if your application is not able to tolerate the loss, then you have to think of a proper protocol. So आपको एक ट्रांसपोर्ट सर्विस से एक्सपेक्टेशन है कि डेटा लॉस ना हो, क्योंकि समटाइम्स आपके लिए डेटा लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यू डू नॉट वांट टू लॉस द डेटा, खास करके जो फाइल ट्रांसफर रिलेटेड एप्लीकेशन हैं या टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन हैं या वेब सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन जहाँ पे वेब पेजेस आप डिलीवर कर रहे हैं। देन टाइमिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है आपकी सर्विस से, यू मे रिक्वायर दैट योर डेटा नीड टू बी डिलीवर्ड विद इन ए टाइम फ्रेम, मिनिमम टाइम में इतने से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, खास करके जो आपके टेलीफोनी रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, लाइक वॉइस कॉलिंग आप कर रहे हैं या वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा टाइमली डिलीवर हो, है ना। या इंटरेक्टिव गेम्स आप खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं आप उसमें, सो दीज रिक्वायर्स लो डिले, दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस रिक्वायर लो डिले। लो डिले का मतलब है आपका डेटा एक विद इन टाइम फ्रेम में डिलीवर हो जाना चाहिए। तो टाइम रिलेटेड गारंटी आप ट्रांसपोर्ट सर्विस से चाह सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ सर्विस दैट डेटा शुड बी डिलीवर्ड विद इन ए टाइम फ्रेम, टाइमली डिलीवरी हो। समटाइम्स सम एप्लीकेशंस रिक्वायर थ्रूपुट, सो थ्रूपुट मींस एक्चुअल रिसीव्ड डेटा रेट, जो रिसीविंग को किस रेट से डेटा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट, वी हैव सीन दिस डेफिनेशन। सो मेनी एप्लीकेशंस रिक्वायर्स ए थ्रूपुट गारंटी, खास करके मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस रिक्वायर्स ए थ्रूपुट गारंटी, क्योंकि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में जैसे आप यू आर लिसनिंग म्यूजिक, तो आपने कभी म्यूजिक सुना हो या ऑनलाइन आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो 2G के टाइम का एग्जांपल याद करिए, व्हेन यू आर ट्राइंग टू लिसन म्यूजिक ऑनलाइन, सो जब इंटरनेट ठीक से चल रहा है देन एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, बट इंटरनेट बिकम्स स्लो, देन आपका पूरा एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। मूवी बफरिंग कर रही है, आप बैठे हुए देख रहे हैं उसको गोले को घूमते हुए, एंड इंपॉर्टेंट सीन आया उस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया मूवी का, एंड आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, मूवी में बफरिंग ही नहीं हो रही है, एंड देन यू आर गेटिंग इरिटेटेड। सो स्पेशली मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस रिक्वायर दैट मिनिमम दिस काइंड ऑफ बैंडविड्थ नीड टू बी गिवन टू द एप्लीकेशन। इससे कम बैंडविड्थ मिलेगी तो एप्लीकेशन का जो यूजर एक्सपीरियंस है दैट मे बिकम पुअर, है ना। इन सम केसेस कुछ एप्लीकेशन है जिसमें बैंडविड्थ स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल ईमेल है, 5 मिनट की जगह पर 10 मिनट में पहुंच जाएगा, कोई बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आपका वेब पेज, आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, एक न्यूज पोर्टल खोल रहे हैं, 1 मिनट की जगह पर पेज 2 मिनट में खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ का अनर्थ नहीं होने वाला है, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है ना।
So nothing is going to happen. You can tolerate it. Okay. So such kind of applications are called elastic applications. Those applications that can tolerate the variation in the throughput, or that can also work with low throughput, are called elastic applications. But there are certain applications, especially multimedia applications, they cannot tolerate variation in the throughput, or they demand a minimum throughput requirement, or they need a minimum throughput, are called non-elastic applications, and non-elastic applications require a throughput guarantee. So if you are developing application, you may expect that your transport layer protocol should give a throughput guarantee. And then last, that is very important for many applications, security. Whatever you are sending on internet through some transport layer service, your transport layer should give secure delivery, should provide secure delivery. That means in between, somebody should not be able to read your data, should not be able to modify your data, and so on. So these are the mainly 4 service expectations, or you can say that the quality of service requirements that an application may expect. As an application developer, you may expect these kind of quality of service from the transport services that internet offers. Now these are the expectations. Let's come to the what internet's transport layer protocol actually delivers. ऐसा तो नहीं है, एक्सपेक्टेशन तो हमारी इंडियन रेलवे से भी बहुत है, but what we receive may be different from the expectations. So let's see what internet transport layer protocols gives us, or can give, similar to Indian Railway actually. We will see that. So some of the examples of the application are there. You can go through this table. I think I have elaborated to you what are the related requirements for different kind of applications. For example, file transfer application can tolerate data loss. Cannot tolerate data loss. File transfer, email, web document, they cannot tolerate data loss. Real-time audio, video, they are loss tolerant. That means generally the multimedia applications are loss tolerant. Instant messaging cannot tolerate the loss. है ना, आपने एक लाइन लिखी अपने दोस्त को, वो लाइन डिलीवर ही नहीं हुई, देन हो सकता है उसमें आपका कम्युनिकेशन का मीनिंग ही बदल जाए. थ्रूपुट, ये डेटा, ये जो है ना इलास्टिक एप्लीकेशंस हैं, दीज आर द इलास्टिक एप्लीकेशंस, दे कैन वर्क विथ एनी काइंड ऑफ थ्रूपुट, बट मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस रिक्वायर्स मिनिमम थ्रूपुट, and similarly time sensitive. So you can just go through this table that summarizes the data requirement of throughput requirement for different application categories. Okay, now let's see what are the transport service protocols that you have on internet. I think you may be getting bored, so let's just have discussion on this slide, then we will close. Okay, so internet offers 2 transport layer services. One is TCP and another is UDP. So these are the 2 transport layer services that are provided by the internet. So any application can use any one of these services. Okay, now these services have different their own characteristic. So let's in brief let's talk about what characteristic TCP service offers. TCP is called transmission control protocol, and it is a connection oriented protocol. Connection oriented protocol means whenever 2 processes will use TCP, then it is required that they enter into a dialogue first. That means they will establish a informal kind of connection. Okay, that is called connection oriented service. So अभी हो सकता है आपको connection का meaning समझ में नहीं आया. We will go into that in very much detail. Then TCP is a reliable transport service. So reliable transport service means whatever you will send through the TCP, your application process will definitely receive that. Okay, that means reliable transport means it doesn't provide data loss. इसमें data loss नहीं होगा. Right? Okay, again star is there. That means terms and condition apply.
तो that means unexpected situation में data loss हो सकता है. I want to say that. Otherwise, it will not do data loss. Whatever you will hand over to TCP, it will deliver to the recipient process. Okay. Flow control. Flow control का मतलब है कि sometimes it happens. We have discussed this also. The sending process may generate data at a speed which is larger than the consumption rate of your receiving process. Okay, so if the data is being delivered to a receiving process which is larger than the consumption process, then data will be lost by the receiver. Receiver side पर lost हो जाएगा, है ना, overflow हो जाएगा. So it is necessary that flow control need to be done. So that means sender should send only that amount of data that can be consumed by the recipient properly. वहां पर overflow ना हो. So this is called flow control. So TCP does flow control. Then congestion control. We have also seen that many times it happens that a router may get the amount of data that it cannot handle. So once a router gets the data that is coming at higher speed of the router's processing speed, then router will start dropping the packets and data loss will occur. So this problem need to be regulated, or this problem need to be avoided. So TCP have a mechanism that can control this process or this problem actually. That so TCP have a mechanism to control the congestion on the router. Okay, but TCP does not provide timing guarantee. That means timing की guarantee TCP doesn't take. It doesn't take the guarantee of the timing कि data immediately deliver होगा या within this time deliver हो जाएगा. TCP cannot give this guarantee. Okay. Then minimum throughput guarantee. TCP also doesn't give any kind of minimum throughput guarantee. Fourth, TCP also doesn't give any kind of security guarantee. Okay, this is the talk. This is about TCP. TCP क्या service देता है, क्या नहीं देता है. Now let's come back to the UDP. Now UDP is called unreliable data transfer protocol. ठीक है, it is जो नाम है इसका, that is called user datagram protocol, but it is a unreliable data transfer service. Unreliable means it doesn't give you any kind of delivery guarantee. तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक लेटर बॉक्स से लेटर भेजा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है. एक साधारण डाक से भेजा होगा ना कभी कभी लेटर, तो आपको कहा जाता है कि इसकी गारंटी नहीं है साधारण डाक से कि डिलीवर होगा कि नहीं होगा. वी विल डू इट आवर बेस्ट एफर्ट डिलीवरी. पोस्ट ऑफिस अपनी बेस्ट एफर्ट लगाता है बट गारंटी नहीं लेता उसकी डिलीवरी की. तो सिमिलरली यूडीपी ऑल्सो डज द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी बट इट डजंट टेक द गारंटी ऑफ द डिलीवरी ऑफ द डेटा. द डेटा मे बी डिलीवर्ड और माइट नॉट बी डिलीवर्ड. Okay, so that means it doesn't offer any kind of guarantee related to data loss. Data loss हो सकता है और उसकी कोई गारंटी भी नहीं लेता. टीसीपी गारंटी लेता है लेकिन डेटा लॉस की. सो गारंटी का मतलब ये भी नहीं होता कि 100% होगा. एक्सेप्शनल केसेस में कई बार नहीं भी हो सकता है डिलीवर. तो एक्सेप्शनल केस को हम तो छोड़ देते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल केसेस. सो यूडीपी डजंट टेक एनी गारंटी. सो यूडीपी डजंट ऑफर रिलायबल डेटा डिलीवरी. UDP does not set up any kind of connection. So that means ये रिसीवर को भरोसे में भी नहीं लेता है कि बताता भी नहीं है पहले से कि आई एम गोइंग टू सेंड एनीथिंग, है ना. सो रिसीवर को अनएक्सपेक्टेडली डेटा कई बार डिलीवर होता है. सो इट डजंट डू ए कनेक्शन सेटअप विद द रिसीवर. इट डजंट ऑफर एनी काइंड ऑफ रिलायबिलिटी. इट डजंट ऑफर फ्लो कंट्रोल. दैट मीन्स सेंडर और रिसीवर प्रोसेस के बीच में कोई फ्लो कंट्रोल नहीं करता है. तो सेंडर को पता ही नहीं चला उसने रिसीवर को ओवरफ्लो कर दिया, इतनी स्पीड से डेटा भेज दिया. तो सेंडर को ये पता ही नहीं है रिसीवर ओवरफ्लो हो रहा है, सेंडर इज सेंडिंग डेटा. तो दिस प्रॉब्लम में अराइज. कंजेशन कंट्रोल भी नहीं करता है यूडीपी. इसे मतलब नहीं है राउटर पर कंजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है. इट डजंट बॉदर अबाउट दैट. टाइमिंग से रिलेटेड भी गारंटी नहीं लेता है. थ्रूपुट से रिलेटेड भी गारंटी नहीं लेता है. सिक्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं है. नाउ क्वेश्चन आ जाता है फिर यूडीपी की जरूरत क्या है जब ये कुछ करता ही नहीं है. तो व्हाई इट इज देयर. ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट कि यूडीपी की क्यों जरूरत है. इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. सो नाउ यू कैन सी दैट देयर आर टू ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज at the internet, at the transport layer of the internet. One is TCP and UDP. आपने देखा कि केवल एक जो रिक्वायरमेंट थी हमारी डेटा लॉस, इसको केवल टीसीपी फुलफिल करता है. इसके बाद थ्रूपुट, सिक्योरिटी, टाइमिंग, इसकी कोई गारंटी इंटरनेट नहीं देता है आपको. सो दैट मीन्स हम तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे बट
The transport protocol that are available on internet doesn't offer anything. हमारी एक्सपेक्टेशन का 25% डिलीवर हो रहा है वो भी, और इसमें से एक जो दूसरा प्रोटोकॉल है यूडीपी वो कुछ भी नहीं फुलफिल करता है, कोई भी एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं कर रहा है. Okay, so this is the situation of quality of service of transport over the internet. Now अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई इंटरनेट बनाने वाले क्या इतने बेवकूफ लोग थे? क्या रियलिटी में वो बेवकूफ थे कि उन्होंने ये गारंटी और ये सबका ध्यान ही नहीं रखा? बट लेट मी टेल यू, नो, दे आर नॉट फूल, दे वर वेरी स्मार्ट, और उनका ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था. वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन until now, you can ask. सर कंजेशन कंट्रोल क्या था ये टीसीपी Congestion में? control means actually what happens when a router is there, and router is generally receives traffic from more than one sources. So suppose this is a router and it is receiving packets from more than one sources, and routers की एक processing speed होती है, let's say r packets per second ये process करता है. But suppose that router is receiving the packets at the speed which is greater than r. So जो receiving speed है, let's say that is s packets per second, and s is greater than r. Then what will happen? राउटर जितने प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उससे ज्यादा पैकेट्स इसके पास आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं. तो व्हाट विल हैपन? एक टाइम बाद क्या होगा? सो जनरली जब ज्यादा कुछ पैकेट्स आते हैं तो राउटर के पास बफर है, तो उसमें वो रखते जा रहा है, रखते जा रहा है, रखते जा रहा है, रखते जा रहा है. बट इसके बाद क्या होगा? एक टाइम बाद बफर भी फुल हो जाएगा, फिर राउटर के पास कोई जगह ही नहीं बचेगी पैकेट्स को रखने की, एंड राउटर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग द पैकेट्स. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंजेशन. जब राउटर पर जरूरत से ज्यादा पैकेट्स आने लग गए, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड से ज्यादा पैकेट्स आने लग गए, देन इट कंजेशन की सिचुएशन हो जाती है. फॉर एग्जांपल, सपोज आप एक बैंक की विंडो पर की बात करते हैं. बैंक, देयर इज ए काउंटर ऑन द बैंक. सो बैंक जो ना, बैंक पर काउंटर है, वो क्या करता है? लेट्स से द पर्सन दैट इज सिटिंग ऑन द काउंटर सर्व्स 2 person per second, or say 1 person per second. Let's I don't know कितना टाइम लगता है, but let's assume that 1 person per second वो सर्व करता है. एंड जो वहां पर स्पेस है, वहां पर लाइन में केवल 10 लोग ही खड़े हो सकते हैं, ध्यान रखना. ठीक है? तो एक काउंटर है, उस काउंटर के सामने लाइन लग सकती है, तो उसके लिए जो लाइन की कैपेसिटी है वो 10 लोग ही खड़े हो सकते हैं. नाउ ये क्या कर रहा है? 1 person पर सेकंड की स्पीड से सर्व कर रहा है. नाउ सपोज 1 person पर सेकंड की स्पीड से एंटर करते हैं बैंक प्रीमाइस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस काउंटर पर कोई भीड़ नहीं होगी. नाउ लेकिन अज्यूम करिए 2 persons पर सेकंड आने लग गए काउंटर के पास, तो क्या होगा? पहले सेकंड एक सर्विस लेके चला जाएगा, एक क्यू में लग जाएगा, है ना? और फिर तब तक जब तक इसका नंबर आएगा तब तक 2 लोग और आ चुके होंगे, है ना? तो हर एक सेकंड में एक पर्सन क्यू में बढ़ता चला जाएगा, और 10 सेकंड में आपकी क्यू फुल हो जाएगी, है ना? 10 सेकंड में 10 लोग चले जाएंगे और 10 लोग यहाँ के लग जाएंगे, और उसी स्पीड से आ रहे हैं लोग. तो क्या होगा? एक टाइम बाद, मतलब आफ्टर 10 सेकंड, इस क्यू में खड़े होने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी. देन वी कैन कॉल इट ओवरफ्लो हो गया. सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन. ऐसा होगा ना, तो बहुत लाइन लंबी होती चली जाएगी, लंबी लाइन होती चली जाएगी, तो एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन शुरू हो जाएगी जहां पर लोगों का धैर्य खत्म होना शुरू हो जाएगा. सो सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो आल्सो हैपेंस हियर. यहाँ तो पीपल को ड्रॉप नहीं किया था, लेकिन बट हियर राउटर डजंट हैव स्पेस टू स्टोर द पैकेट्स, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड से ज्यादा पैकेट्स आ रहे हैं. राउटर आर पैकेट पर सेकंड जो ना सर्व कर रहा है, और एस पैकेट पर सेकंड विच इज ग्रेटर देन आर जो ना राउटर के पास पैकेट्स आ रहे हैं. सो एक टाइम बाद ये सिचुएशन आएगी कि राउटर्स जो है, जो क्यूज है उसमें कुछ समय तक तो हैंडल कर लेगा, क्यूज में पैकेट्स को रखेगा, लेकिन क्यूज भी फाइनाइट है. वंस देयर क्यूज विल बी फिल्ड, देन राउटर के पास और पैकेट्स को स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं होगा, एंड देन राउटर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग पैकेट्स, एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नाउन एज कंजेशन. ठीक है? और एक टाइम ऐसा आएगा जब राउटर पैकेट्स को क्यू में रखने और
बाहर करने में ही लगा रहेगा, कोई को सर्व नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ भीड़ बढ़ेगी, लोग लड़ना शुरू करेंगे, फिर काउंटर से उठ के आएगा और इन्हीं लोगों को समझाता रहेगा, लोग लाइन में लगते जाएंगे, लाइन बढ़ती जाएगी, ये किसी को सर्व नहीं कर रहा है और लाइन बढ़ती चली जाएगी, एंड नो सर्विस विल हैपन, एंड देन फिर chaos क्रिएट हो जाएगा, है ना। So similar thing also happens at the router, and this situation is known as congestion. I hope आपको clear हो गया होगा congestion. Yes, sir. Anyone else? और कोई किसी का क्वेश्चन हो? सर हम्म, पहले वाला हम लोग न्यू स्टूडेंट है तो क्या? सर आपने जो पढ़ाई है, ये जो पीपीटी है ना? हाँ, सर हम लोग को कैसे मिलेगा? शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप पे, ठीक है। पहले वाला? हाँ, पहले वाला जो यूनिट 1 का चाहिए ना आपको, या दोनों चाहिए? यस सर, पहले की जो पढ़ाई हो चुकी है। अच्छा, मैं शेयर कर दूंगा। सर स्टार्टिंग से कि हम लोग लेस ज्वाइन किए हैं इसलिए। नहीं, मैं यूनिट 1 की जो ना शेयर कर दूंगा आपको स्लाइड्स, और यूनिट 1 के लेक्चर्स मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, तो लॉकडाउन के टाइम में सारे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, तो वो एक आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप वहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियोज अपलोडेड हैं, तो यूनिट 1 आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, हाँ? और आप बुक पढ़ सकते हैं, और स्लाइड्स में आपको शेयर कर दूंगा। ओके। सो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, बट थोड़ा सा एक इशू ये है कि इफ दोज वीडियोस आर क्रिएटेड इन हिंदी एक्चुअली, और मैं उसके पीछे मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि लास्ट ईयर या उससे पहले जो बैचेस थे उसमें अदर स्टेट से बच्चे कम आए थे, तो ज़्यादातर बिहार के ही बच्चे थे या एक दो यूपी के थे, तो वो सब हिंदी वाले ही थे, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज हिंदी। लेकिन मेरी थोड़ी आदत है, तो वहाँ कुछ कुछ जगह पे मैंने इंग्लिश भी यूज की है, बट एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज फैक्टर है, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी देन देयर विल बी प्रॉब्लम। आई होप ज़्यादातर लोग जिन्होंने ज्वाइन किया दे अंडरस्टैंड हिंदी, है ना। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बीच में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं केवल इंग्लिश में ही बात करूँ, लेकिन स्टिल बीच बीच में हिंदी आई जाती है, वो आदतन है, मेरा भी मीडियम शुरू से ही हिंदी रहा है, तो कंप्लीट इंग्लिश रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाता हूँ, अनकॉन्शियसली और अननोइंगली अपने आप हिंदी मुंह से बोल आ जाना शुरू हो जाती है ना। तो दैट मे बी लिमिटिंग फैक्टर। बाकी तो जो हिंदी मीडियम से उनके लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, इंग्लिश मीडियम से दे कैन गो थ्रू वीडियो, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं और यू कैन गो थ्रू द स्लाइड्स। उसमें पहली यूनिट में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हैवी और टेक्निकल नहीं है, और सबने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा होगा, ठीक है। आगे के जो क्लासेस हैं आप कोशिश करिए ये मिस ना करिए, क्योंकि आप थोड़े से हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। खास करके जो टीसीपी हम लोग पढ़ने वाले हैं, टीसीपी इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल, तो उसको समझने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और मेरे चैनल पर वो वीडियोज हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, और बाकी ये स्लाइड्स हैं आई विल शेयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, आई होप आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, एवरीबडी इज देयर। If you are not there, you can request Dr. Piyush to add your name there, if somebody is not there on that WhatsApp group. जनरली सब लोग होंगे, क्योंकि लिंक आपको वहीं से मिलती है, दैट मीन्स आई अज्यूम दैट एवरीबडी इज देयर। इफ स्टिल somebody is not there, then you can request Dr. Piyush, or any of you can help someone else, or the person who is not on that WhatsApp group. Okay, now let me take the attendance and then we will close. Why it is there? Yeah, Google Doc is not working. I not. Give me some time. My Google Doc is not working actually.
पहले भी वो सब सारी प्रॉब्लम मेरा डिस्कनेक्शन है सब गूगल डॉक की वजह से हुआ था एक्चुअली. इट इज नॉट लोडिंग माय स्लाइड माय गूगल शीट. सर हम्म. सर अभी यूनिट 1 में है कि यूनिट 2? We are currently we are studying unit 2. ओके, थैंक यू. Okay. Kumari Suman.